में पिक किया गया और अभी भी कोई रन नहीं। विली को 6 विकेट चाहिए थे और फिर वो 100 विकेट उनके हो जाते इन बचे हुए 3 मैचेस में, जिसमें ये मैच शामिल है। वो 6 विकेट लेते हैं। हालांकि उनको एनुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया है, 1 साल का भी नहीं दिया गया है, और इसलिए संभवतः उन्होंने इसी कारण से अपना रिटायरमेंट क्रिकेट से घोषित कर दिया है। लिविंगस्टन की ये गेंद थी और बल्ला घुमाया, बैट स्पीड ज़बरदस्त थी, लेकिन वहाँ पास में ही शॉट एक्स्ट्रा कवर के आसपास गेंद को फील्ड कर लिया डेविड विली ने, और विली के फील्डिंग करने के साथ ही गेंद को वापस दी जा रही है। एक शॉर्ट स्क्वायर थर्ड मैन, एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट मिड विकेट और फाइन लेग दायरे के अंदर है। लंबा स्ट्रोक खेला इस बार, लेकिन ज़मीन पे घास पर लुढ़कती हुई गेंद दूर चली गई है बाउंड्री लाइन की तरफ। अंदर आते हुए फील्डर ने उसको, वोक्स ने गेंद को उठा लिया, थ्रो किया और वापस लिविंगस्टन को दी गई है। बहुत ज़्यादा दर्शक नहीं है और खामोशी के साथ क्रिकेट देख रहे हैं। बैकफुट पे जाके स्क्वायर कट कर दिया उस गेंद को, स्वीपर कवर मौजूद है, केवल 1 रन मिलेगा। सुंदर पूर्वानुमान लगाते हुए वोक्स अपनी दाईं तरफ तेजी के साथ गए और उन्होंने उस गेंद को उठा लिया। तो रोशनी पर्याप्त है और उमस इतनी ज़्यादा नहीं जितनी कि बंबई में थी। उमस कुछ कम है इस समय। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा उमस कम होती चली जाएगी और इस समय 27% की उमस है। इस बीच ये गेंद फ्लाइट किया इस बार, इस गेंद को मिडल और ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को धीरे से पुश कर दिया। 64 रन 2 विकेट पर, स्मिथ 21 और लेबुशेन 13। पहले कोशिश उनकी यही है कि अपने विकेट सुरक्षित रखें और 1-1-2 से ही स्कोरबोर्ड को भी गतिशील रखें। 14वां ओवर पूरा हो गया। 64 for 2 then after 14, and personally I'm a bit surprised, Beneath, that we're seeing Liam Livingston, who's actually a part-time bowler more than anything else, and you have your two spinners, Adil Rashid and Moeen Ali, who are there, and both of them accomplished spinners. And why they weren't given the first over bowled by a spinner, well, I'm sure that Jos Buttler's got something up his sleeve. Maybe get the 4th, 5th, 6th bowlers out of the way while the Australians are still sort of marking times, I said, and trying to resuscitate their innings. 64 for 2 in 14, and here goes Mark Wood. And once again, the ball coming back from outside the off stump onto the middle and leg stumps and walks right across, and then with a flick of the wrist plays it down towards square leg and picks up a single. And so many bowlers have tried to get him out, trying to flick it down to across the line on the off and middle stumps, but his hand and eye coordination is so impeccable. Is Smith's, and is almost always able to get the bat onto the ball and down towards square leg or deep fine leg. This time it was deep fine, picks up his 22nd run, and Labuschagne now on 13, facing up to Mark Wood. Here's Wood, and this one once again coming back slightly in from outside the off stump, played with an angle bat down to point, and there is no run. So a good holding action here by the Australian batsmen, and also a good holding action by the England bowlers. The most wickets for England against Australia in ODIs: 45 Adil Rashid, 38 James Anderson, 35 Ian Botham. Break off, but you can see over there 45 Adil Rashid, and hasn't got a bowl so far. So I'm sure that there's been a game plan in the English dressing room as to try and see whether you can give Livingston a couple of overs, or maybe induce a false sense of confidence in the Australian batsman. Here goes Wood, and this one once again jagging back from outside the off stump, played into the gap at mid-wicket, and they scramble across for a single as the score moves on to 66 for 2. और आदिल रशीद सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर हैं इंग्लैंड की ओर से एक दिवसीय क्रिकेट में। उनसे बड़ी उम्मीदें होंगी, और ये जिस तरह से खेल हो रहा है, अब उत्सुक है, तरस रहा है एक विकेट के लिए। इंग्लैंड ये साझेदारी को, पार्टनरशिप को तोड़ना चाहते हैं। Yes, indeed, they do want to break it, and I wonder whether Wood is the right man, but maybe the right man to keep the runs under control, because if you allow these two batsmen to get going, I mean, Steve Smith, we know what he can do, we know what Magnus Labuschagne can do. So now a slip coming into place, and I think that's a very, very good move there by Jos Buttler, because you have Smith on strike, and you have a slip in place as well. So as he tries to move across the wickets, maybe the ball that moves away from outside the off stump, and this one is once again a short ball.
And is that one for the over? Yes, it is. It's not called wide. So once again, well directed, perhaps slightly wide outside the off stump, but nevertheless had Smith ducking and weaving a little bit. 66 for 2 then, and we're in the 15th over. इरास्मस का इशारा आया कि 1 फॉर द ओवर, आपकी शॉर्ट बॉल हो चुकी है। देखें तो इरास्मस बहुत वरिष्ठ अंपायर हैं, काफ़ी समय से अंपायरिंग कर रहे हैं। ये उनका चौथा वर्ल्ड कप है, दिस इज हिज 4th वर्ल्ड कप। याद आता है, तुषार बता रहे 2011 में कीनिया और न्यूजीलैंड का मैच चेन्नई में हुआ था, वो पहला वर्ल्ड कप मैच था इरास्मस का। Here goes Wood from the far end, comes in and bowls, and this one once again slightly short of a length and coming back into Smith. And this is bread and butter for Smith as he walks right across the stumps and tucks it away down to square leg for a single. And you can see that always the first movement of Steve Smith is his back foot moving right across the stumps. In fact, the toes outside the line of the off stumps. You can see immediately what he's trying to do, covering all his 3 stumps, except for Wokes, where he was slightly more in line, but for the others moving right across the stumps and playing it down to square leg. Last ball then coming up. There's slightly somnolent cricket happening right now at the Modi Stadium in Ahmedabad. 67 for 2 then coming up to the end of the 15th over. Here's Wood, and this one again played off his pads down in the big gap there, but at mid-wicket, all the way down to deep mid-wicket. And now they're going to pick up 3. Yes, 1 for the throw. Oh my goodness me. Almost a mix-up. But then it's such a long boundary that by the time the throw came in, they were able to scramble back and pick up those 3 runs. So 6 runs in that over means 70 for 2 after 15. And there's going to be, I think, a drinks break now, as Vineet was telling you. It is so hot that fluids are important. You don't want the batsmen or the fielders to cramp up. क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। तो ड्रिंक्स मैदान पर हैं, खेल रुका हुआ है। 70 रन 70 मिनट के खेल के बाद 70, 2 विकेट के नुकसान पर 15 ओवर, यानी कि कम से कम 10 मिनट ज़्यादा खर्च किए हैं इन 15 ओवर्स के लिए। और जब ड्रिंक्स मैदान पर आए तो स्मिथ 23 और लबुशेन 17 रन बनाकर खेल रहे हैं, और लगभग बराबर गेंद किशोर दोनों ने खेली हैं। स्मिथ ने 31 गेंदें खेली हैं और लेबुशेन ने 33 गेंदों का सामना किया है। कश्मकश भरा क्रिकेट, संघर्षपूर्ण क्रिकेट देखने को मिला है। तो बड़ा ही दिलचस्प रहा है कि 3 हमने तेज बॉलर्स देखे हैं। स्पिन का 1 ओवर देखा जरूर है लिविंगस्टन जब बॉलिंग करने के लिए आए थे, लेकिन अगर आप तो किस्म के हैं और स्मिथ किस तरह से उन तीनों को फेस कर रहे हैं वो भी बड़ा दिलचस्प है कि उनका अंदाज तीनों को खेलने का बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। किसी को वो सीधा खेलना पसंद करते हैं जैसे, और जब वो वोक्स को खेलते हैं तो कुछ ज़रूर ज़्यादा आक्रामक होकर, क्योंकि इनटू द पिच है, कुछ गेंदें उनकी लेंथ में कम होती हैं, तो आड़े बैट से खेलने की कोशिश उन्होंने की थी। लेकिन आपने इस मैदान पर पहले भी मैच किया, मुझे लगता है आज आउटफील्ड थोड़ी धीमी नज़र आ रही है पिछले मैचों की तुलना में। वो रफ्तार शॉट्स में नज़र नहीं आ रही है जो पिछले मैचेस में मिली थी। तो हेड कॉट रूट बोल्ड वोक्स 11, वार्नर कॉट विली बोल्ड वोक्स 15। 10 गेंदों का सामना हेड ने किया, वार्नर 16 गेंदों का सामना किया। दूसरा विकेट गिरा था 6ठे ओवर